I request Director Sir to felicitate Dr. B.K.S. Sanjay Sir with the last stole as a gesture of love. I would like to welcome our first guest speaker for today, Dr. Gaurav Sanjay, who is orthopedic surgeon associated with different prestigious medical firms in and around the world like AIIMS Rishikesh, Apollo Hospital New Delhi, Queen Mary Hospital Hong Kong, Tohoku University Hospital Japan, and many more. Dr. Sanjay too has been felicitated by a huge number of awards, observership, and fellowship worldwide. He holds different social activities for underprivileged masses. Sir, we are honored to have you here. I request you to kindly enlighten us with your words of wisdom. A very good morning to all of you. Probably the time is around afternoon, so yeah, very good afternoon. And I thank everyone at Tula's Institute, especially Dean Sir, and the people who have invited us to share a little bit about this week, which is being celebrated by United Nations, and it's been done regularly. And this is the 6th global road safety week, which we are celebrating this year. Road safety is very important. I was talking to Sir just a little while back, and he says that it's very unfortunate that some students of Tula's Institute have also succumbed to road traffic accidents in the past couple of years. Although it feels very nice to get all these new swanky vehicles, roam around the streets with them, with your friends and colleagues. But in spite of that, I think the most important part about all of traveling and all is that we need to be safe. And this lecture is basically based around safety. And if you people are not aware of the implications it has on your body and on your family, then this will probably be an eye-opener for you as to how grievous or how fatal these accidents can become, and how even if you get to survive these accidents, sometimes it's so depressing for the family and for the person who undergoes these accidents to really cope up with them in the near future. So as the student from Tula's has told you that the slogan for this year is to maintain our speed limits around 30 kilometers per hour, and this is basically based on that if we drive slowly, then there are less chances that we can meet with an accident. The amount of time you need to actually push the pedal or put on the brakes and save yourself and the other person from an accident, 30 kilometers is a relatively less speed at which we can avoid all these things. So we've been actually giving these road safety awareness lectures since past couple of years. I've joined since 2017, and my father, Dr. Sanjay, he has been delivering these public awareness lectures since the past 2 decades almost now. So this is a very interesting video. I think this is a new Sunday and somebody's running. So I think even this Selaqui road, you can have such accidents, and if you can see again, the road looks very clean, nothing. So you can very well imagine what the injury this child might have faced. But just imagine if you are driving this vehicle. So what do you expect? Do you think that the nearby people will let you away with nothing and like, okay, मुझे तो लग रहा था बच्चे की गलती है, सर आप जा सकते हैं? Or do you think a mob can actually kill you? Maybe this child might have been saved somehow, but
Do you think the mob will be very grateful to you that, what do you think? What is it in your experience? Do you think they will let you off? No. So this is the problem that, at times, even, if you are safe, you have to look about everywhere that, because the system on the roads is such that, the dividers are not high enough, or, we don't have enough railings, because it's such a big task and such a big, huge financial burden even on the governments to, put railings around the whole road so that, you can stop these accidents. But I would like to tell you that in very big developed nations and cities, such as I've been to Guangzhou a couple of years back in China, where the roads, if there is a divider, then the divider will have these fences which will be up to 6 to 7 feet. If it's a highway, there is no way you can actually even, sort of, thoda rasta bana ke aap road cross kar pao. It's not possible. So this is the need of the hour actually, because vehicles are increasing and the speed limits, people are crossing with the new type of vehicles which are being put on the road. And for the statistics, I would like to tell you that in India, we have 1.5 lakh deaths per year. 415 people die daily in road traffic accident. And it was a surprise to many of the people who thought that, during the COVID outbreak, that, oh God, this is a pandemic, everyone is dying. But strangely enough, people who have been associated and, treating these road traffic accidents, the number of people who are dying at the peak of COVID, I'm just talking about dying, they are still, less than the amount of people we lose to road traffic accidents. And, the best part about today's lecture is that, I'm getting to address people who are the most vulnerable. So students like you who fall between the age group of 18 to 20, 20 to 30, and 70% of the deaths which are occurring in road traffic accidents are occurring in the age group which, sort of go out to the roads, reach their offices, make some daily living and earn for their family members so they can put food on their plate. Around 5 lakh road traffic accidents are occurring in India, and out of those, 3 lakh become crippled. So it doesn't mean that, you met with an accident and you got a good operation, you went well, but still, these patients, they have some sort of disability in spite of receiving the best sort of treatment. And with better quality of roads, the incidence of fatal accidents and polytraumatized patients is increasing day by day. So that means that, you're driving, very less likely nowadays, you're driving on a highway and that only your one bone is going to be fractured. Right now, all these injuries, they're associated with head injuries, chest injuries, multiple bones which are fractured. And at times it becomes difficult, even if you have the money, sometimes, you must have seen on the spot deaths. You meet with a fatal accident, आपको कोई बचाना भी चाहता है, एम्बुलेंस भी पहुंच जाएगी, साथ वाले भी आपको हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन by the time you reach the hospital, you're already dead. Because the first hour of any injury, which is known as the golden hour, is the most important part of a post-accident state, where that can change between life and death for the patient. And there are increasing incidences of drinking and driving. As you've seen that, the number of liquor shops and, the amount of money, our families are generating or, are getting nowadays. जैसे हम कहते हैं ना, our quality of living has improved because, अब वो वाला time रह गया कि अब सबको 2-3 हज़ार रुपए मिलते थे, सब बस अपने they could meet with their ends. It is not like that. Relatively, the amount of income which most of the people are nowadays getting is enough for them to, venture out into drinking. And if they have more money, then they buy their own vehicles, which are very swanky. And this is a lethal combination of drinking and driving. It will be strange for a lot of you to know that in the year 2000, this is a statistics given by the government, which said that there were only 4 lakh vehicles in Uttarakhand.
सिर्फ 4 लाख व्हीकल्स होते थे सन 2000 में जब ये स्टेट बना था, स्टेटहुड बना था. And it will be surprising for you that in the year 2020 we have 30 lakh registered vehicles. So this is an increase of 650%. And it is virtually not possible for a country like India to expand the roads, even in spite of the government giving a lot of emphasis that we should have better roads, better quality roads, we should have highways, expressways. But the roads haven't per se widened to the extent, to the proportion that the number of new vehicles we have on roads. So this is a road traffic accident. We'll just discuss a few and show you a few slides of how grievous and how big these injuries can become. This is the leg of the patient. You can see it is open from one side. This is from the front. So that is the tibia, which is the shin bone. It has been exposed, and you can see that he initially came with this sort of a fixator, from आम भाषा में शिकंजा कहते हैं, to save his limb from the backside and cover his soft tissue. We had to do some skin grafting for this gentleman. So this gentleman on the day of accident had such a comminuted fracture. You can see this is the big bone which is known as his leg. He went to the first hospital. They removed all the bones because they felt that all these bones were infected. Initially, you can see this is not visible. These are both his legs, which have been compared just to see how much his leg has been shortened initially, which was almost by 12 centimeters. We had to put him on this Elizarov frame so that he could have an equal limb. Ultimately, you can see that gap. It has been filled by new bone formation. And this accident occurred in 2018, and this patient has been still on our follow-up. He is a driver, and his fractures have finally consolidated after 3 to 4 years. Now you can imagine his story. He finally managed to initially get some funds to buy a car. Initially, he was driving a rental car and just getting his wages as a driver who was on the roles of the guy who was given him the car. He was giving some daily money back to the person and taking a bit out of it. When he finally bought the car, he met with his road traffic accident. So since 3 to 4 years, he is unable to drive his new Swift which he bought, and he thought that he could get a generous income and support his family. So just imagine 4 years without work, how difficult it must be for a driver who must be earning 15,000-20,000 rupees at maximum, and for 3 to 4 years he has no money. He's been financially supported by his brother, and now he's in a lot of emotional trauma that I must repay back to my brother all the money he has given, and he's finding it difficult to get back his daily source of earning. So you can see this is another person. He met with a road traffic accident. One of his leg had to be amputated initially. The second leg was also advised some amputation because of some infection, and we came up with an innovative way of shortening his other limb also. And this gentleman, he finally has one artificial limb, and we have tried to equalize the limb. And this is probably around 7 to 10 years down the line. Patient is very happy. This is another patient. You can see he met with a road traffic accident, and second leg was operated, got contaminated and infected. After a long, prolonged period of treatment, he managed to get well. You can see that in these injuries which I was talking about, that polytrauma, कई सारी चोट इकट्ठी लग जाती हैं. This is a skull. आप देखेंगे स्कल के बीच में एक डिफेक्ट है. This was done because at the primary hospital where he went, he also sustained a head injury. Head injury में आपने सुना होगा कि subdural hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, जिसमें होता है कि स्कल जो होती है, स्कल के नीचे ब्लीडिंग होने लगती है, and when there is bleeding beneath the skull, the brain and the skull, there is bleeding between them, and then the skull itself acts as a restraint for the swelling of the brain to expand. So what happens is, जब brain compress होने लगता है, साथ साथ वो brain जैसे आप कहोगे damage होने लगता है due to just the compression of the blood. So a part of his skull had to be removed,
and the doctors told him that once you're okay at a later stage, we will reconstruct this. So interesting fact is that his skull is still remaining in the bone bank of the primary hospital, where they can put this part which was removed initially to save his life. Finally, this gentleman, as I told you, he came with his other limb was fractured, and that was amputated at the primary hospital. Even this leg, you can see a big heel wound which he sustained. Very difficult to cover these wounds with normal surgery. Had to go some plastic surgery procedure. Finally, this gentleman, within a time of 1.5 years, when his fracture finally united, he got married. He's happy. Road traffic accident, had a segmental fracture of his femur bone and his tibia bone. That means his thigh bone was fractured at 2 places. His leg was also fractured at 2 places. Some implants and surgeries were done by some primary surgeon. They got infected. He consulted to us after 1.5 years. It took 5 years for his fractures to heal. Can you imagine? 5 years. He was not having any job. He was married. And he was clever enough to give raise to 2 babies within the time he was just lying on the bed. So he could just sort of propagate his family, but that was without any job. So these accidents, they meet with a lot of blood loss. This is another patient you can see. As soon as he came to our hospital, his hemoglobin was 5.3. Normal hemoglobin in an individual is between 12 to 14. So there's so much of severe blood loss. D-dimer is another level which probably you heard in the COVID times, where it is a sign of acute infection, and it was raised by almost 10 to 15 times. He was advised amputation, but the patient and the relatives refused. They didn't want any amputation. And you can see how the sick look of the patient, that he is very traumatized, and he was in septic shock. जिसमें हम कहते हैं कि the limb may be need to remove in case his vitals and his blood parameters further deteriorate. So a total of 17 units of blood were transfused. 10 surgical procedures were done within 20 days of hospitalization. So you can imagine that he was in the operation theatre almost every second day, and there was so much of blood loss that 17 units, which is much more than even the requirement which we say in massive blood transfusion. So you can see, just to save his leg, big incisions had to be given so that his vessels did not compress within the leg. And strange enough, the story, the sad part of the story, this is his mother. This was his brother, who died on the spot of the accident. This lady, she was a widow even before the accident, and she had lost one son. And this boy, she was in no condition to get his leg amputated, as she saw that probably he would take care of her in her old age. Although she did not have much money, but what happened was that she was ultimately financed by her brother, who was living in Qatar, and he could manage some finances. And this patient was finally saved, and he's walking nowadays. Another aspect of road traffic accidents, as we say that these accidents have many untold stories. This guy, he's a very well-known mechanic in Dehardun, and you can see the deformity he has. So this, if you can see, it is like a snake-like deformity, and he met with an accident. He got some operation done. The operation got infected. When he came back home and finally had this deformity, you will not believe his family, they kicked him out of the house. They said तेरे पर कोई नाग देवता का कोई प्रकोप है और आप घर से बाहर जाओ, है ना? It's just like living in a closed community where they're not very educated, and they ultimately threw him out of the house. And finally, after many years, so he came for consultation.
you can see that in the initial operation this drill bit was broken and his hand was in a very deformed position. Multiple surgeries had to be done to correct this deformity, and you can see finally we were able to give him a near normal looking hand and a forearm. So this patient, he was very happy at the end, and he is now deformity free. You can see this is a common scenario in the in India, where this gentleman, he's 17 years old, he has no valid driving license, and he's driving since the age of 14 years. So 14 years you cannot even have a learning license. He was overtaking from another bus, and he met with a road traffic accident. Got a surgery done somewhere, got contaminated, the doctor left some foreign material, and you see, we have many people on the road right now, and the question is, should such people be permitted to drive? Okay, so sort of a hilarious video, just to show that there are many type of drivers who are there on the street. Probably looks like some Sudawala crossing also, where nobody is seeing from where everyone is just driving, right? So just see this gentleman. So second look, now he's dramatizing, right? क्या तो क्या मुझे चोट लग गई. So you've already seen, he hit two people in 10 seconds. Okay, now the driver from this truck will come. He will say that, why tu nikal le? Ye to pitega. Okay, so this gentleman is like, okay, let me run away. तो आपको लगता है कि ये सही चलाएगा? और ये देखो. So, you say that, we should not make the same mistake. But I think if we make this mistake so regularly, so it is very difficult, and a lot of boys will agree. We have a lot of girls who drive like this on the roads, and it's very difficult for us to drive. But anyways, and no gender bias, but yes, we should all drive very safely. So this is another experiment which is conducted in Hong Kong. Okay, I'll just brief you before starting the video. So nowadays, girls and boys, it's very important that we know to the harms of mobile phones also. Okay, everyone has a mobile phone, everyone has a smartphone as of now, and you see that a lot of youngsters, especially college-going students, they want to be updated with Instagram, Snapchat, and WhatsApp, and it is sort of a real-time thing, right? कि दोस्त ने एकदम से हाई मैसेज करा तो मुझे उसी सेकंड ही रिप्लाई देना है. But that thing is so harmful, and this video is basically there to show you that how fatal an accident can be, and the biggest point is that कितना वक्त लगता है एक छोटे से एक्सीडेंट होने में. So what they did in Hong Kong to do a social experiment was that you go to a movie hall and you buy a ticket at the counter. तो सब लोगों का एक जैसे कहते हैं ना मोबाइल फोन रजिस्टर हो जाता है. तो the authorities did not tell the people that such an experiment was being conducted. So just brief you a little bit about the video is that the people, they get their ticket and they sort of come into some similar auditorium, okay, and then they take a seat. Okay, so now we'll start the video once again. Okay, so they bought a ticket. Now they have entered the auditorium or the theater. Okay, they bought their popcorn and all. Okay, as I told you that they're all unsuspecting moviegoers. Nobody knows that some experiment is being conducted. So this guy from the location-based broadcaster within the system, he sent a text message, okay, to everyone. Okay, and this is just a video which is being shown on their screen also. Okay, they're all settling down. And सामने ये वीडियो चल रही है उनके स्क्रीन पे. Okay, somebody's having coke, somebody's having popcorn. Somebody's already sleeping.
Okay, so now this guy will send a message, okay? It's like a bulk message. सबको भेजा देखो. ऐसे हो ना? किसी का हाई का मैसेज आ रहा है. इतने में देखा क्या? Okay, so I think like she's so startled, right? हुआ क्या? So mobile use is now the leading cause of death behind the wheels. Okay, so it's a reminder to you to keep your eyes on the road. Okay, don't take it so easily because after an injury you don't know first of all that will you survive or not, and even if you survive you have to meet up with the expenses, and sometimes even the expenses don't help you. Okay, so just some basic rules. Okay, I think everyone knows it, but nobody follows them, especially all these boys who are there in the auditorium also. So always wear a helmet, but please don't wear like this. Okay, the reason is you people may not be knowing, but you see injuries which occur to such people. So what happens is his elbow is basically locked. Okay, इससे इसकी elbow नहीं बचेगी. होगा क्या जब ये गिरेगा तो एक तो ये यहाँ से टूटेगी और एक यहाँ से टूटेगी. And these injuries are very grievous, very difficult even to the best of best surgeons to give you a good elbow which will move like a normal elbow. Very difficult. And this next photo is also tell you, please do not wear a helmet like this also. Okay? So this gentleman, he दोस्तों का दोस्त है, ये तो मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन पीछे देखो इन्होंने हेलमेट भी कैसे पहने हो माइंड वाले, जैसे ये एकदम से ब्रेक मारेगा ये सब लोग देर में आ गए. ओके, so get the right helmet. This is very important, and the most important part about the helmet is the helmet strap. Okay, helmet strap की importance इतनी है जैसे कि अगर आपने एक पजामा पहन लिया और नाड़ा नहीं, अगर उसको टाइट करोगे तो क्या होगा? निकलेगा, बस यही होता है. तो अधिकतर टाइम पे आपने देखा होगा जल्दबाजी में, ताकि you do not get the fine from the पुलिस वाला कि सर अरे हेलमेट तो पहना हुआ सर, आप मुझे क्यों रोक रहे हो, है ना? तो ऑब्वियसली हेलमेट स्ट्रैप के लिए अभी तक कोई फाइन नहीं है, बट जस्ट मेरा कहने का मतलब है अगर आप हेलमेट पहनने के लिए 4 या 5 सेकंड लगा सकते हो तो वो स्ट्रैप को भी जरूर आप प्लीज बाइंड इट, बिकॉज द रीजन इज व्हेन यू फॉल. कई बार अगर हेलमेट जो है वो स्नगली फिट ना हो, कहने का मतलब है कई लोग बहुत बड़े सर का हेलमेट अपने छोटे से सर पर डाल लेते हैं, तो ये टॉपल ऑफ हो सकता है. ठीक है, और आपने जो भी 5 या 10 सेकंड के लिए अपने लिए ड्रामा करा है, दूसरों के ड्रामा करा है, बट इट विल नॉट सेव यू, क्योंकि वो हेलमेट ही जो है वो गिर जाएगा. एंड वंस इट फॉल्स ऑफ, हेड इंजरीज एज आई टोल्ड यू दे आर सो ग्रीवियस, इतनी खतरनाक होती है कि ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है. ठीक है, प्लीज यूज अ सीट बेल्ट. आज के समय पर सीट बेल्ट आर समथिंग व्हिच आर गिवन बाय द कंपनीज इटसेल्फ. इट जस्ट टेक्स 5 सेकंड्स. ओके, आपने हाथ इधर से करना है, उधर से करना है, एंड द सीट बेल्ट इज ऑन यू, एंड दे डू सेव यू फ्रॉम वेरी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज. And even in foreign countries, people are getting seat belts for their pets. We don't want our loved ones to die, right? So if you don't use a seat belt, then this can happen. Oye, auntie ji gayi dusre gaadi mein. Okay? So if you want to go to the next car, yes, you can probably not wear seat belts. But in a road head-on collision, this can happen. See, so you can see that this other gentleman, he was probably wearing a seatbelt. He did not insist on the co-passenger to wear a seatbelt, and the co-passenger did not want to stay with him, and ultimately went to the other car. Why are seatbelts important to your safety? Seatbelts are one of the most effective road safety actions in history. Seatbelts have been shown to reduce the risk of fatal injury by up to 75%. Tens of thousands of motor vehicle occupants are killed or seriously injured each year from not wearing. So an interesting question for all of you. Does anyone know who invented the seatbelt? Road safety is everyone's responsibility.
Yes, that's right. Who's the guy? Very nice. So another interesting part which I would like to tell you is that Volvo is a Swedish company, okay? And patent एक बारी आप ले लो फिर you can get money from that patent, that this was invented by me. But owners of Volvo and the company itself was so generous that they decided in the जैसे कहते हैं जनहित में. So for the safety that they thought that this was so important that they finally decided to give out this design to all the automakers. And we must be grateful for the contribution of Volvo in saving so many lives. So we don't know like directly कोई शायद जानता भी नहीं होगा कि ये Volvo का invention है and ultimately how many lives such a small invention has been able to save so many lives. Use the zebra crossing, although per se in India लोगों को zebra crossing के आगे ही गाड़ी लगाते हैं तो zebra crossing दिखती नहीं है. But still, look left and right before you cross the road. Use overhead bridges and subway. Please follow the traffic lights. This light is so important. The yellow light. People who are on the red light, before it turns green, sometimes shows yellow. They want to go ahead and ease off. The people who just see that it's about to be the red light, they also want to cross. So at the time of the yellow light, this is the most vulnerable time where you can meet with accidents. So please be very careful, very very careful at the time you see a yellow light on the traffic light. It's better to stop. Within the city, please drive on low beam, and highways you go for high beam. Okay, it's very difficult to see and visualize in a high beam. You've probably seen many times while going back home or driving. If the other gentleman coming from the other side is on a high beam, it directly reflects on your eyes, and you will start cursing him because you can't see at all. Please follow the speed limits, and road traffic. These railway crossings are very less nowadays. Otherwise, these accidents are very very fatal. So I'll just conclude with this video which you guys have probably seen. इनकी नाम देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती देखो, इसकी आंखें देखो. पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है. मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर बड़ी होशियार. क्या गाना था वो? अभी तो तू क्या कर रहा है? ये दोनों लड़के कौन है? तेरे भाई साहब आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ. आप इसकी बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हाथ से गला था महमूद. ये तेरे बाप का रोड नहीं है. तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के घूम घूम करके शर्म नहीं आता है? और अभी उतर के ले जाओ. आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए क्योंकि किसी के शाबाश. So guys, रोड किसी के बाप की नहीं है, okay? ना मेरे ना आपकी. But please drive safely. It's very important. You all guys and girls. You'll be the future of the nation and for bread earners for your family. It is very important to have good looking limbs and limbs which can be functional for which you can actually do something. So the engineer हाथ ही चला के क्या engineering करेगा? Okay, thank you everyone. Safe driving is in your hands. An interactive section. Moving forward, I would like to welcome our second guest speaker for today, Dr. B.K.S. Sanjay, who is a senior orthopedic and spine surgeon working at Sanjay Orthopedic Spine and Maternity Center. He has been awarded Meritorious Foreign Fellowship and was recorded in Guinness Book of World Records and Limca Book of Records for its outstanding surgical achievements. Dr. Sanjay is the founder president of Uttarakhand State Chapter of Indian Orthopedic Association, and the President of India has conferred National Civil Honour Padma Shri upon Dr. B.K.S. Sanjay on 9th November 2021. Sir, we are highly honoured to have you here. I request you to kindly enlighten us with your words of wisdom. It's my privilege to be over here. I had been earlier in this place in the same auditorium, though the number was less at that time, but it is almost fully full. I'm really
grateful for the Sandeep Vijayji, Director Tula, and Nishant Saxena ji and Emmanuel Gabriel and their management, because they have been giving this opportunity to me. As the Gaurav has told that we are doing this for the last 20 years or so, and this thing has given me, in fact, the name, fame, money, as well as the honor, which I presume that this work is contributed to get the honor of the Padma Shri as well today. Because this has not been given only for my medical achievement, but for the social achievement as well. This is the part of the lecture which I gave to the Member of Parliament, because I had got the Padma Shri and they invited me to address the Member of Parliaments in the Delhi. And this lecture is the part of it. And why I choose it, because they give me, you can talk about any issues. They were giving me the 30 minutes, you can talk on any issues. And then I choose in only these issues, and I said, and this is the सड़क दुर्घटनाओं के दुष्परिणाम, क्योंकि मैंने इनको बहुत नजदीकी से देखा है और इनको आप देखेंगे, इनके हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ आपके कारण ही बोलेंगे। कारण क्या है ये आपको देखने की बातें हैं। और तो ये हम जो पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम करते रहते, वेरी इंस्टीट्यूशन, मैनी इंस्टीट्यूशन, बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों, अभी हमने ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बताया था, और इसी तरह से अभी हम पिछले हफ्ते ही संडे को 9 तारीख को मेडिकल कॉलेज पटियाला में थे, वहां पे ये दिया हुआ था। और इस तरह के हम लेक्चर्स देते ही रहते हैं। और इट स्टार्टेड इन फैक्ट इन 2001। पहले तो हम सिर्फ देते थे, लेक्चर्स को बोलते थे, फिर मैंने इसको प्रिंट भी किया है और ये कहीं पे आप देखेंगे 2001 which I published in the it was published in the गढ़वाल पोस्ट। ये जो आप कुछ स्टोरी देखेंगे, देखिए अल्मोड़ा बाइक बस खाई में गिरी, 29 मरे, फिर इसके बाद 46 मरे, 23 मरे, एंड दीज आर द कॉमन प्रैक्टिस इन फैक्ट। और आज भी कोई बहुत हालात बदले नहीं। रोड एक्सीडेंट 11 के लिए 2 इंजर्ड व्हीकल्स। और अभी आपने बहुत हाल में ही देखा हो, कार हादसे में 3 भाइयों समेत, ये जौनसार के थे और 3 भाई की डेथ हो गई। 37 killed in medical Goa bus mishap मुंबई। और ये हम पहले कहीं भी थे, पहले हमने अपने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में दिया, स्टेट में दिया, रीजन में दिया, नेशनल दिया, देन आई टेकन इट टू द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस एज वेल। और इसका टाइटल होता था इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। जो अभी गौरव ने आपको बहुत हिलेरियस वीडियो दिखाए, ये सर अपने यहाँ होते हैं, सर बाहर तो देखने का ऐसा मौका मिलता नहीं है। और लोग इसीलिए इसको बहुत एंजॉय भी करते और मुझे भी अच्छा लगता। सड़क दुर्घटनाओं के जो मुख्य कारण हैं, जिसको मैं मानता हूं नींद और नशा। अभी की जो घटनाएं हुई, 3 घटनाएं आपको बताते हैं। जो चंपावत में हुई, जिसमें 11 लोगों की डेथ हुई, बारात से आ रहे थे। अभी तोता घाटी में हुई, जो अपनी भांजी के लिए शॉपिंग कराने मेरठ गए हुए थे और इसके बाद लौट रहे थे, 6:30 बजे उनकी सुबह तोता घाटी में हो गई। और अभी जो जौनसार में हुई है वो भी है। और असम में अभी बिहू से कर रहे थे, वो 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे थे, जिनमें 4 लोगों की डेथ हुई है। और इस तरह के बहुत से जो हम आपको दिखाते रहते हैं और लोगों को बताते भी रहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट हो, छोटे हो, बड़े हो, हमारा सिर्फ उद्देश्य होता है, जैसे यहाँ पे है, आप देखें, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। आपने जो अभी फोटो देखे, I can imagine that I don't think that you can, what the Gaurav has shown, you will forget ever. And not only this thing, you remember, you share these incidences with your friends as well. I strongly believe, and we have done this study as well, 90% of the जो road accident के जो cause हैं, वो सिर्फ ड्राइवर्स होते हैं। और आप देखिए अपने यहाँ पायलट कितना बड़ा होता है और कार का ड्राइवर। आपने देखे एक्सीडेंट किसके होते हैं? प्लेन के ज्यादा होते हैं, कार के ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कारों से चल रहे हैं। हजारों बिलियंस ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग बाय एयर, बट हाउ मेनी एक्सीडेंट्स? वेरी रेयर, एक्सट्रीमली रेयर। बट इन द रोड्स एवरी डे, जस्ट गौरव इज टोल्ड, एवरी डे 1 एयर क्रैश, एयर जंबो जिसमें 400 लोग बैठते हैं, वो लोग हर दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो क्रैश हो रहे हैं। ये देखिए, इसमें आप यमुना एक्सप्रेस वे पे हादसे में इसके 3 डॉक्टर सीनियर रेजिडेंट होते हैं। पहले ये लोग एमबीबीएस करते, फिर एमएस करते, 3 साल की ट्रेनिंग लेते, तब सीनियर रेजिडेंट बनते हैं।
और एक ही बैच के, यदि आप देखें, ये एक ही बैच के 8 लोग थे, क्योंकि दोस्ती की उन्हीं के साथ होती है, उन्हीं के साथ आप खेलते कूदते हैं, गाते वाते हैं, मूवी देखने जाते हैं। और ये लोग गए, इन्होंने ड्यूटी की 8 घंटे की, इसके बाद डिनर किया कनॉट प्लेस में नेरुला में, और इसके बाद कार चलाई और फिर मथुरा जा रहे थे, वहीं पे पेड़ पे चोट लगी एंड डेथ हो गई। मत्था टेकने जा रहे थे खुद, लेकिन टेक तो लिया, लेकिन जिंदा वापस नहीं लौट के आए। ये देखिए, कार प्लेज आउट बाय 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियां, दादा दादी, पापा मम्मी और बेटा। और इस तरह की घटनाएं ऐसा नहीं कि एक आध हो रही है, हर दिन हो रही है। पाया कि जब आप अपने पूरी तन्मयता से कोई भी काम करते हैं, सिर्फ आपको वही याद रहता है, और इससे आप मैसेज ले जाइए। मल्टीपल टास्क जो होती है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं होती। एक ही टास्क जब आप अच्छी तरह से करते हैं, उसी की एफिशिएंसी अच्छी होती। 700 फीट खाई में गिरा, कोई भी है अच्छा भला आदमी हमारे आप जैसा नीचे से आए, तो यदि हम लोग यदि 20 लोग जाते हैं तो हो सकता है 2 तो उनको चलना मुश्किल ही हो जाए। और जब टूट जाने के बाद ओवर स्पीड है, इसका बहुत बड़ा कारण होता है। एंड हम कहते भी हैं, हायर द स्पीड स्टीपर द रेट ऑफ द फेटलिटीज। अभी तो रोड एक्सीडेंट्स में 1 किलोमीटर में 1 की डेथ होती है। इमेजिन करिए अटल जी का ये क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, या हमारे नितिन गडकरी साहब का जब ये हो जाएगा ना कि यहाँ पे इतने रोड्स बन जाएंगे, तब क्या होगा? जब लाखों किलोमीटर रोड होंगे तो लाखों लोगों की डेथ होगी। इस ब्रिज के ऊपर आपका क्या ख्याल है? इस टूटे हुए ट्रक, उस पर ये इतना बड़ा ट्रक ले जा रहा था, और इसको मैं मानता हूं ये एक्सीडेंट नहीं है, ये तो सुसाइड है या होमिसाइड है। और जब उस दोस्त ने सोचा यार हमें सुसाइड ही करना है, तो क्यों ना दोस्त को ले जाए, शायद इसीलिए उसको इसमें बिठाया हो। और ये मदारियों के खेल तो अब नहीं होते हैं, लेकिन अब हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ही देख लेते हैं। और ये देखिए सर, इन्होंने कितने जबरदस्त ढंग से सिंक्रोनाइज किया, ना आगे ना पीछे गए, बस उसी खेल को देख रहे हैं। और ये आम घटनाएं हैं, कोई ऐसी नहीं। इस तरह की हम लोगों को अखबार के माध्यम से, अपने माध्यम से, अब मैं कुछ ये दिखाऊं। देखिए सर, ओवरलोडिंग एक कारण है, ये कल्चर है, ये नीड है। इसको आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 लोग बैठे हुए। और यहाँ पे देखिए, और ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है सर, यहाँ पे सब जगह बैठे, इधर भी ऊपर भी, सिर्फ बंदे इंजन में नहीं बैठे, क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा है, और जल गए तो फिर बैठ भी नहीं पाएंगे। शायद डॉक्टर भी इसको अच्छा ना कर। इनको देखिए, 1 2 3 4 5, और दादी भी कुछ दिए है, हमारे ख्याल से कोई बच्चे नहीं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बंदे ने लाइट बचा रखी है, अपने की कोई चिंता नहीं की है, क्योंकि टूट जाएगा तो हमारे जैसे डॉक्टर कुछ ना कुछ फ्री में भी इलाज कर देते हैं, कई बार रहम आ जाता है, लेकिन मैकेनिक बहुत महंगे हैं। इस तरह की लोडिंग है, बहुत चल रही है। जहां भी जिसको मन होता वहां पे देखिए, अभी जैसे गौरव ने बताया कि सड़क क्या बात की है, हमारे ख्याल से इनके लिए तो बिल्कुल सही है, इन्हीं के बात की है। एंड नेशन इज लूजिंग लॉट, हाई टॉल रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक लॉस। हम ये पायनियर गेस्ट कॉलम लिखते रहते, बहुत से लिखते रहते। ये पाकिस्तान की है, बिकॉज हमारे कजिन्स हैं, तो वो भी इसी तरह से करते हैं। डेथ देखी किस किस की हुई, आप सड़कों पे। राजेश पायलट मिनिस्टर थे, जसपाल भट्टी कॉमेडियन थे, मुंडे जी मंत्री थे, साहब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, और सिद्धू जी ने खुद नहीं, सिद्धू जी ने अभी से नहीं ठोक रहे, इनको ठोकने की बचपन से आदत है, तभी तो क्रिकेटर बने ना। फिर उन्होंने बूढ़े आदमी को ठोक दिया, क्योंकि वो इनसे आगे निकल रहा था। और कोई स्पोर्ट्समैन ऐसे कैसे सोचे, जब उसने ठान लिए कि मैं ही फर्स्ट आऊंगा, उससे कोई पहले, तो उन्होंने उसको ठोक दिया, उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद इनको कन्विक्ट किया, 307 में इनको जेल हुई, फिर उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। आप ये देखिए साहब, भाई सलमान खान के दिखाए बिना लड़कियां तो बिल्कुल नहीं कहेंगी। अजीत जोगी भी उसी में गए हुए हैं, और ये आम बात है सर, कोई एक नहीं है, आम बात है। सो गए, अभी आपने देखा होगा, 3 killed SUV falls in Bengal after diverse dose of। नींद एक ऐसी चीज है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, और ये चीजें हो रही, नाइट की घटनाएं हैं, बड़ी खतरनाक हैं। ये देखिए, ये तो बनती है, लेकिन इनसे हम कहते हैं सेल्फी बनने के और भी तरीके हैं। यदि रोड को आपको कुरुक्षेत्र बनाना है, तो फिर आप मेरी कॉम मनी और मेडल लाइए। ये पिक्चर देखिए आपको लगता है एक्सीडेंट होते हैं, और कहीं खरोच हो गई तब क्या होगा इनको?
और आपने सुना होगा सिर्फ सूजन आने से टांगे कटती हैं, और कहीं कट गया तो फिर इनको ब्रेस भी नहीं लगेगी ना प्रोसेस लगेगी, क्योंकि ब्रेस प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। लगती है, मैं एज ए डॉक्टर आपको बताता हूँ, प्रोसेस उन लोगों को लग जाती है जो लोग डायबिटिक होते हैं, उनको लगाया जाता है, लेकिन उनमें स्किन इंटैक्ट होती है, अंदर कुछ उसमें डाल दिया जाता है, इनका कुछ नहीं। ये देखिए, ये इंडियंस ही है जो कर सकते हैं, इन्होंने इंग्लैंड में किया हुआ है। We Indians are very adventurous. ये देखिए, रोड पे हो रहा स्टेडियम बना हुआ, जज साहब को ठोक दिया क्योंकि उन्होंने जजमेंट गलत दिया था। ये अंकल जी का देखिए क्या नहीं कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, और चला भी रहे हैं, और सुन भी रहे हैं। ये नहीं पता ग्लास में क्या है, शराब है तो पक्का है डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, यदि पानी भी है तो इनकी पूरी जिंदगी पूरी नहीं होगी, ये मेरा मानना है। इसी तरह से फोन के ऊपर जैसे है, और इससे गरीबी बढ़ रही है, हर आदमी गरीब हो रहा है। अब आपका कितना भी पैसा कमा रहे हैं, यदि हम 3 लेने जाएंगे तो हमारी 3। गडकरी साहब कहते हैं, वो भी कहते हैं 10% ग्लोबल ग्रोथ से हमारी कंट्री में 1% व्हीकल है, 10% डेथ है, जीडीपी का 3 से 5% तक लॉस हो रहा है। लड़कियां जब इतनी लंगड़ी हो जाती हैं, आप देख सकते हैं, यह लड़की 20 साल की है, जब इतनी लड़की लंगड़ी हो जाएगी, शादी ब्याह बहुत समस्या होती है। ये लड़के ने गुस्से में घर में कहा, सिर्फ इतनी सी बात है, जज का लड़का है, बड़ा भाई एमबीबीएस कर रहा था, बड़े भाई की शादी होने से पहले कह रहा था मेरी शादी कर दो। उसे गुस्सा आ गई, पिताजी ने कहा नहीं बेटा, पहले बड़े की करेंगे तब तुम्हारी करेंगे। गुस्से में मोटरसाइकिल उठाई, नी तोड़ दिया, जितने नीवे लिगामेंट्स सब इसने तोड़ दिए, सब तोड़ दिए। तो इस तरह की गुस्सा बहुत अच्छी नहीं होती है। इस तरह के लड़के बच्चे, इसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये 17 साल की लड़की है, देहरादून में हुआ था, स्पोर्ट्स गर्ल थी, ये बर्थडे के दिन इसके साथ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, उंगलियां कटिए। अब बताइए कितना पेनफुल होगा ये। मेरा मानना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और हम सब लोगों को इसको प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहूंगा, जो यातायात के नियम है, यदि आप सीख नहीं पाते सीख लीजिए, सीखने के बाद उनको मानिए और दूसरों को मनवाइए। आपके साथ जो चलता है उसको भी बताइए, कार में जा रहे हैं, यदि आपको सीट बेल्ट लगाना या हेलमेट पहनना इतना बड़ा काम नहीं, इसको आप रिफ्लेक्स डेवलप कीजिए। जैसे आप शर्ट के बटन लगाते हैं, पैंट में जिप लगाते हैं, इसी तरह से आप इसका रिफ्लेक्स डेवलप कीजिए कि आप हेलमेट लगाएं और सीट बेल्ट लगाएं और दूसरों को इनकरेज करें। ये हम लोगों के लिए, हम लोग जो करते रहते हैं, इंडिया पब्लिक अवेयरनेस में हमें मिला हुआ है, और हमने कहा हुआ है, क्योंकि ये मानता हूँ कि हम सब तरह से करते रहते हैं इंडिया इंटरनेशनल में, क्योंकि हम कॉलम लिख लेते रहते हैं, और सिर्फ इसी उद्देश्य से कि लोग इनको पढ़ें और लोग इनको देखें। और इसी तरह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नो लेस देन ए पेंडेमिक, ये हमने अभी नहीं लिखा है, बहुत पहले ये जून में लिखा हुआ 2020 में, जबकि पैंडेमिक शुरू हो रहा था मार्च में। और इस तरह से इंकरेजमेंट मिलता है, सबकी इच्छा होती है पद प्रतिष्ठा प्रशंसा पैसा प्रोत्साहन पाने की, और कुछ लोगों को मिल भी जाता है। और रात की घटनाएं होती हैं, जानलेवा होती हैं, आप रात में ना चलिए, क्योंकि जितने भी जो एक्सीडेंट होते हैं, जो अभी आपको मैंने बताया, 5 लोगों की फैमिली भांजी के लिए बाजार मेरठ शॉपिंग के लिए गया था और लौट के आया। नींद का अभाव, नशे का प्रभाव है, इसके एक्सीडेंट के बहुत कारण हैं। लेकिन हाँ, रात में चलने के लिए ड्राइवर तो खुश होता है क्योंकि उसकी अर्निंग बढ़ती है, लेकिन आप देखिए जिसकी एक्सीडेंट हो जाता है उसकी अर्निंग घटती है। Government should educate the traffic rules, government should enforce the traffic rules, people should learn the traffic rules, people should follow the traffic rules। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जैसे ईद दिवाली होती है उस तरह में मेले लगाए जाएं, आप फिर इनको बता जाए, और जो नहीं मानते हैं उनके लिए यही कहा जाए, ए पनिशमेंट इज नॉट पेनफुल, हाउ कैन इट बी पनिशमेंट। यदि 500 रुपए का है और हम 5000 उसको चालान दे सकते हैं, तो फिर वो पनिशमेंट कहाँ हुआ। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैंने एक कविता काव्य संग्रह लिखा है, उस कविता को आपको सुनाना चाहता हूँ। कविता हिंदी में होगी, लेकिन मुझे आशा है आप लोगों को पसंद आए। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं, कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूँ, कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते। सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के भी। रात के सपने अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है। रात के सपने कम ही पूरे होते हैं,
दिन के अधिकांशता। एक सर्वे किया गया है जिसमें आज भी टीनेजर्स हैं, बहुत से लोग, उसमें आज भी लोगों को, जबकि ऐश्वर्या की तो शादी हो गई, ऐश्वर्या को आज भी सपनों में देखते हैं। और जो लोग हैं, और लड़कियां तो खैर सलमान खान को देखती हुई, क्योंकि अभी सलमान खान को देखा भी जा सकता है क्योंकि वो अभी भी बैचलर है। कभी कहते हैं सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूं अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों की नापा और पहुंच गए मंगल तक। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे हों, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया वसुदेव कुटुंब का, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार। कहते हैं वे अपने सपने बेच दो, उनकी तरह मैं भी परेशान हूँ, क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं। यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन। सपने ही तो आधार हैं हमारे और आपके जीवन के। इन सपनों की नींव पर तो आज यह इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य है हमारा और आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। सहयोग के बिना हम सब की उत्पत्ति नहीं हुई होती। सहयोग के बिना हम सब की उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा ये सपना ही तो था और क्या। हमारे सपनों को संभालने के लिए आपको धन्यवाद और आपके सपनों को संभालने के लिए हमारे। मैं एक बार फिर आपके मैनेजमेंट को, आपके फैकल्टी को, आप सभी विद्यार्थियों को मैं अपनी धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकाला और मुझे अवसर दिया कि मैं आपके अनुभव को आपके साथ में बांट सका। आप सब लोगों को मेरा धन्यवाद। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि एक यदि आप प्रतिज्ञा लें, अपनी सीट पर खड़े हो जाएं, दाहिना हाथ आप आगे निकाल लें और एक प्रतिज्ञा लें और उसको माने तो आपके लिए और हमारे सब के लिए बहुत अच्छा होगा। आइए आज हम सब मिलकर 6वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 17 मई 2022 के अवसर पर शपथ लेते हैं कि हम अपने एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए सड़क यातायात के नियमों को सीखेंगे और उनका पालन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Dean Academics, Nissan Saxena ji, and my dear students. Today on 6th UN Road Safety Day week, we can say, I really thank to Padam Shri Dr. B.K. Sanjay ji and his son Gaurav Sanjay ji, because both of them has nicely presented the entire topic in front of you. देखो, एक डॉक्टर जिस हिसाब से प्रेजेंटेशन कर सकता था उससे बहुत बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने आपके सामने प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ह्यूमर की भाषा में आप लोगों को सिखाया कि रोड सेफ्टी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जिस चीज को आपने हंसते हंसते देखा है उसको थोड़ा सा सीरियस ले लो, जीवन में हमेशा सफल रहोगे। हम देखते हैं, हमने ह्यूमन में देखा कि छोटी छोटी गलतियों में क्या क्या हो जा रहा है, ये हमने हंसते खेलते देखा। लेकिन ये हादसा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस हादसे के पीछे जितना बड़ा दुख परिवार और समाज को मिलता है वो सबसे बड़ी चीज है। एक इंसान का क्या है, वो तो चला गया, उसने अपने पीछे जो छोड़ गया वो सबसे बड़ी बात होती है।
आप खेलते कूदते अपनी ड्राइविंग को बिना कंट्रोल किए हुए चलते जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा आपने कभी सोचा नहीं। तो ये सारे परिणाम आपको बहुत ही ह्यूमरस तरीके से डॉक्टर साहब ने आपके सामने रखा। इसको सीख बांध लो, इसको गांठ बांध लो और अपने दोस्तों को भी रोको। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं तो नहीं चलाता हूं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके साथ आपने कितने दूसरे अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में अवेयर किया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कितने बच्चों, कितने लोगों की जान बचाई। कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ तो क्या आपने कितने लोगों को उठाकर हॉस्पिटल में ले गए। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इन चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरत है। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर बीके संजय। मैं तो पहले भी डॉक्टर साहब से मैं मिल चुका हूँ, उनका लेक्चर सुन चुका हूँ कई बार। मेरे ख्याल से 1-2 बार तो हमारा इंटरेक्शन सर से हुआ है, बल्कि सर का रेगुलर मैसेज भी आते रहता है। गौरव जी से भी मैं मिला हूँ, इनके साथ जो भी सहयोगी आए हुए उनका भी रेगुलर जो है कॉल पहले आया करता था। तो सर को लिंक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और कैसे वैसे नहीं शामिल किया गया। उन्होंने देहरादून के बच्चों को जागरूक करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इन्होंने कई कॉलेजेस और स्कूल्स में जाकर के बच्चों को जागरूक किया है इन छोटे छोटे वीडियो से, इन्हीं ह्यूमरस बातों से। इनमें से यदि हम कुछ बच्चों को भी मोटिवेट कर पाए, इनका ये सपना है कि कुछ बच्चों को भी मोटिवेट कर पाए, कुछ बच्चों को भी एजुकेट कर पाए, तो हमारे समाज में ये दुर्घटना की घटना धीरे धीरे कम होगी। तो इनके इसी प्रयासों को मैं बहुत ही श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और मैं आप लोगों से, बच्चों से, सभी से ये अनुरोध करूंगा कि इस तरह की घटना को ना होने दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।